Hello students. So today's we are going to start this topic. So the topic of the today's discussion is the questions, okay, based on the Nernst equation, right? So in the last class we have done the Nernst equation, right? How it came and how from the Gibbs free energy we have learned everything, okay? We have learned the equilibrium constant, how to how do we get the expression, right? So everything related to that you can see in the last video if you want, okay? Because before doing these questions, the knowing the Nernst equation is very much important, okay? So okay, let's get started. So now today we have taken a question here, right? So we will try to solve this question, and in this very question I will try to uh, explain you how to find out the EMF of the cell, okay, or the E cell, and how to find out the delta G naught or the maximum work done from the cell, okay, and how to find out the equilibrium constant, that is Kc of the from the cell, okay. So in this very question I'll try to cover three aspects, okay, three different question in this very question we will try to do, okay. So that because this type of question generally comes in your board examination also, and in your these competitive examinations also, so you need to practice this type of question very much, okay. So okay, so I'll start now. So first of all, before going to do this, we will have to know the these uh, expression of the Nernst equation. Okay, so I'll show you the expression of the Nernst equation which we have derived in the last class. Okay, so this was the Nernst equation, which was E cell equal to E naught cell minus 0.0591 by n log of product by reactant, or log of, you can say, anode by cathode. So in some book you will get product by reactant, and sometimes it will be written anode by cathode. So either one you can take and you can go, okay. Don't try to take both and you do the questions, okay. Either you do from this expression or you do by taking this anode and cathode, okay. So both are the same things, just the writing thing is different, okay. And this one is the expression of the how to find out Kc, okay. So I hope that you have all noted down, and if not you can just note down, because these expressions I will just now use in doing this very question, okay. So how to approach, okay, how to approach this question. So first of all, my suggestion would be, whenever a question of such type will be given based upon the Nernst equation, you try to write down the half cell equations first, okay. The half cell equations you have to write down first. So in this question you can see that nickel is changing from nickel to nickel 2 पॉजिटिव, राइट. निकल निकल से निकल 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है. दैट मीन्स निकल क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, राइट. एंड दैट मीन्स निकल ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है, राइट. तो हम लोग का एनोड में किसको लेना पड़ेगा, निकल को. एनोड में कौन है, निकल है. सिमिलरली सिल्वर 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 पॉजिटिव से सिल्वर सॉलिड में चेंज हो रहा है, ठीक है ना. दैट मीन्स क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन. सो दैट मीन्स सिल्वर को हम लोग को कहाँ लेना पड़ेगा, कैथोड में. सो ओवरऑल रिएक्शन से हमको पता चल रहा है कि निकल एनोड में होगा और सिल्वर कैथोड में होगा. समटाइम्स ये ओवरऑल रिएक्शन नहीं दिया होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया होता है. तो सेल रिप्रेजेंटेशन से भी तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है. सेल रिप्रेजेंटेशन से भी फाइंड आउट हो जाएगा. लाइक हियर, सी इन दिस क्वेश्चन you see the cell representation is given, not the overall reaction. So cell representation में जो salt bridge होता है ना स्टूडेंट्स, salt bridge का जो लेफ्ट में होता है वो हमेशा एनोड होगा, और salt bridge के राइट में जो होगा वो हमेशा कैथोड होगा. तो इस तरह से तुम लोग हाफ सेल रिएक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है. तो मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन नर्न्स्ट इक्वेशन पे इट गेट्स फॉर्म्ड. सो वंस योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर यू कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. So okay, so for this question I will take, so the half cell reaction, right. So in the anode, first of all, what is happening in the anode? You can try on your own also, right. So nickel is changing to nickel 2 positive, right, giving out the 2 electrons. So this is the process which is taking place at the anode, which is oxidation, right. Similarly at cathode what will happen, at cathode what will happen, this silver, no,
this silver will take up these electrons which are lost by these nickel, and it will change to silver in the zero oxidation state, right? So likewise, this is our anode half cell reaction and this is the reduction half cell reaction. Okay, so both half cell reaction we have written, so it is done. Now we will see the overall reaction. Already the overall reaction is given in our question, this one, but then also we will write. Okay, so first of all, you cancel these electrons. Remember, for cancelling you need to balance these things. Okay, so whenever it is not balanced, you see that the electrons are not balanced. First of all, you try to balance it by multiplying. Like here you can see that silver is balanced by multiplying the whole expression by 2, right? Likewise you have to do, otherwise when you do the question it will be wrong. The answer will come out to be wrong. Now how do we write the overall reaction? The left side we will add, लेफ्ट साइड को हम लोग ऐड करेंगे और राइट साइड को भी हम लोग ऐड करेंगे. ठीक है, सो निकल सॉलिड, ठीक है, लेफ्ट साइड में और क्या है, प्लस 2 सिल्वर पॉजिटिव, राइट. सो लिख लो, राइट साइड में क्या है, निकल 2 पॉजिटिव एक्वाश प्लस क्या है, सिल्वर है सॉलिड. ठीक है, सो ये हमारा क्या है, ओवरऑल रिएक्शन है. सो ओवरऑल रिएक्शन में ये पार्ट प्रोडक्ट होता है, ये पार्ट रिएक्टेंट होता है. ठीक है, और जब हम लोग नर्न्स्ट इक्वेशन में तुम लोगों ने देखा होगा कि हम वी टेक द कंसंट्रेशन, राइट. सो कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन, okay, we will in the concentration of this part, the ion part, and this part will be taken in the Nernst equation, not this one and this one, because they are the solid part. Whenever there is a solid, the concentration is taken to be as 1. Okay, and so in the Nernst equation only we will consider the ions. ठीक है, तो ये product का part है, ये reactant का part है. और जैसे मैंने बोला था कि you can take anode by cathode also. So if you see that ये क्या है, निकल, ऑलरेडी आई सेड यू एनोड. ठीक है, सो अगर कोई एनोड बाय कैथोड करता है तो निकल एनोड में लिखेगा और डिनोमिनेटर में सिल्वर लिखेगा, सिल्वर प्लस. तो सिंपल हो गया, एनोड बाय कैथोड. या कोई अगर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखना चाहता है, दे कैन ऑल्सो राइट, बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द रिएक्टेंट. तो यू कैन सी आइदर थिंग्स आर द सेम, राइट. So now we have the Nernst equation, we will write. We have the Nernst equation which is E cell equal to E naught cell minus 0.0591 by n log of either product by reactant or anode by cathode. So directly I am writing this one, right? Ni2 positive, right? Ni2 positive, and then already I have said you the concentration of silver is 1, so I will not write. I can write also, but I will not write. Okay, and this is in the reactant part, so it will come to the denominator. ठीक है. One more thing, you remember that whenever there will be a coefficient, coefficient अगर होगा, coefficient power में चला जाएगा. अगर coefficient नहीं है, suppose यहाँ पे, so we will not give anything because it is 1, right? We will not write anything. But if there is a coefficient, say 2, 3, 4, so you have to write here as a power. Remember, with the concentration you have to write the coefficient as a power. coefficient power में चला जाएगा, ये चीज ध्यान रखो, अदरवाइज तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे लेकिन आंसर क्या होगा, रॉन्ग आ जाएगा. ठीक है, अभी वैल्यू ऑफ एन क्या होता है, सी एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व. ठीक है, तो कहाँ से मिलेगा, ये हाफ सेल रिएक्शन से मिल जाएगा. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस. कोई अगर हाफ सेल नहीं लिख के भी करता है तो भी इट इज क्लियर दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व. सो द वैल्यू ऑफ एन विल बी 2, राइट. यहाँ पे देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एन इज 2. So I will suggest that always write the half cell reaction and then find the value of n, because sometimes from the overall reaction it becomes difficult to find. Okay, तो हम लोग को E cell find करना, E naught cell क्वेश्चन में दिया हुआ है, right? E naught cell is given, you can see here, right? And n value we found out, it is 2, and these concentration values are given. Nickel 2 plus, you can see the concentration value is 0.160 molar, and Ag plus the value is 0.002 molar, right? So it is given, it will be given in the question. So we can find out the E cell very easily. So E cell equal to E naught cell. So E naught cell is 1.05 volt minus 0.0591 by 2 log of nickel, the value of concentration. So once you write the concentration, don't write the bracket because the bracket represents the concentration. So already you have put it the value, so no need to write the brackets.
एंड स्क्वायर मत भूलना क्योंकि स्क्वायर भी है डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है ना। सो अभी तो सिंपल कैलकुलेशन करो, सिंपल कैलकुलेशन करना है। और ठीक है, सो व्हाट विल कम 1, हाउ मच, like this, right? So once you do the calculation, so you solve this one. So if you solve this one, what you will get? 6, 2. So it will be 10 to the power 4. And this will be 8. So 8 into 10 to the power 4, right? Log of 8 into 10 to the power 4. Oh, sorry, this is 2 square 4. So this will be 4, sorry. So this will be 4, 4 is a 16. So it will be 4 into 10 to the, I've solved this one here, okay. So I know that the calculation is very easy, though for those students who cannot, I mean, how to do with this log, sometimes it becomes difficult. So I'm solving it, right? So the property of log, you know, log of A into log of B becomes what? See, the property is log A into B is equal to log of A plus log of B. So this is a property of log, okay. So this you should know, I think you have know that, okay. Plus log of 10 to the power 4, right? This is A and this is B, right? So like this. Now the value of log 4 is 0.6020. You put it plus, see, one property of log is log of A to the power x equal to x log A. This is also a property of log, okay. So this is log of A to the power x. So this is x, so x will come before and then x log 10. The value of log 10 is 1. You have to memorize some of the values, okay, like log 0 is log 1 is 0, like that. Some values you need to memorize, okay. Like this you will solve, okay. So once you solve, so you log 10 is 1, so this is nothing but 4 into 1 is 4 only, right? So 4 plus this one you do add it, okay. So what do you get? 4.6020, right? Right, you will get it. This is 4 because 4 log 10 is 1, so 4 into 1 is 4 plus this one, right? So the if you add it you will get 4.6020. Ultimately when you do know all these calculation, the value what you will get will be, so half of the calculation to I have done 70%. So what you do, you multiply this one, okay, and then you subtract it. The value you will come out to be as 0.914 volt. So this is the value of the E cell, okay, the value of the E cell. And since this E cell is positive, the cell is spontaneous. So if it asks you that if the cell is spontaneous or not, yes it is spontaneous. Spontaneous है cell because E cell का value क्या है? Positive है. E cell का value positive मतलब cell is spontaneous, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं ई नॉट, ई सेल हम लोग का निकल गया नर्न्स्ट इक्वेशन से, राइट। सो हम लोग का पहला काम तो हो गया, राइट। दूसरा काम क्या है? डेल्टा जी नॉट फाइंड करना, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड आउट द डेल्टा जी नॉट, राइट। सो वी विल फाइंड द सेकंड वर्क विल बी वी विल फाइंड द डेल्टा जी नॉट. So I have shown you know the expression. So the expression was what? Delta G naught cell is equal to minus of NF E naught cell. Okay, this is the expression. So these all expression you note down because this will help you in the doing the numerical. And the value of n is 2 because we are talking about the same cell, right? So the value of n will be 2. 1 फैराडे का वैल्यू पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था 96500 कूलम पर मोल, ठीक है। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम लोग ऐसा लेते हैं, एक्चुअली द वैल्यू इज 96487, राइट। सो वी विल टेक 96500 फॉर आवर न्यूमेरिकल्स coulomb per mole, okay. And the value of E naught cell, so because this is the cell only, so the E naught cell is 1.5 because it is given in the question, right? The E naught cell, because we are talking about this very cell, right? So 1.50 volt, the value of E naught cell लिख लो 1.05
वोल्ट। अभी इसको तो कैलकुलेशन करना एकदम ईजी है, राइट, वेरी इजी। सो यू कैलकुलेट इट, राइट, आई विल नॉट कैलकुलेट, you just calculate it, and the value you will get like this, 2026540 coulomb volt per mole, or you can say it as joule per mole. Okay, joule per mole. And sometimes if you need to convert it into these kilojoule per mole, so you divide this expression by 1000, so you will get kilojoule per mole, in kilojoule per mole. Sometimes they ask you in kilojoule per mole, so you just divide and you will get this in kilojoule per mole. So this calculation you do, it is very simple, right? Do the calculation and you will get this value. You can find out कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। So अभी हमारा डेल्टा जी नॉट भी निकल गया, डेल्टा जी नॉट वी हैव फाउंड आउट। नाउ द वर्क, द थर्ड वन इज द फाइंडिंग आउट द के सी, राइट। हाउ डू वी फाइंड आउट के सी, ठीक है। के सी फाइंड आउट करने के लिए भी एक्सप्रेशन मैंने दिखाया था, राइट। सो व्हाट वाज दैट एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द के सी, राइट। सो आई एम फाइंडिंग आउट हियर द वैल्यू ऑफ के सी, राइट, के सी। सो द एक्सप्रेशन वाज व्हाट, द एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट के सी वाज व्हाट, yes, E naught cell equal to 0.0591 by n log of kc. Okay, these three expressions are required. Expressions ये था kc फाइंड करने के लिए। E नॉट सेल सेम सेल का बात हो रहा है, ठीक है। अभी जो दिखाया उसमें E नॉट सेल क्वेश्चन में कितना है, 1.05 वोल्ट लिख लो। n का वैल्यू दिखाया था 2 है, हाफ सेल रिएक्शन से मिला, ठीक है। और kc तो वी हैव टू फाइंड आउट, तो kc को kc रहने दो। कैलकुलेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो you need to work on that, because for doing these type of numerical, some basic mathematics you should know. So if you multiply this one and divide it by 0.0591, the value will come out to be 35.53 log of kc. Okay, and once you find out kc, so what will happen, log will go this side, and once log gets reciprocal it becomes antilog. Okay, so antilog of 30, that means इससे क्या समझ में आया कि kc का जब भी तुम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें एंटीलॉग का यूज होगा, तो एंटीलॉग फाइंड आउट करना तुम लोग को आना चाहिए, ठीक है। सो हियर आई विल ट्राई टू शो यू हाउ टू फाइंड आउट द एंटीलॉग। ओके, so antilog of 35.53 we need to find out, तो 35.53 से देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग को एंटीलॉग निकालना होता है, ठीक है, इसमें दो पार्ट होता है एक नंबर में, इसको बोलते हैं मेंटीसा, ठीक है, एक नंबर का मेंटीसा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, आई मे नॉट बी अप्रोप्रिएट मुझे पता नहीं भी हो सकता है, ठीक है, जितना पता है मैं इतना समझा के दे रही हूँ। So this is characteristic, this part means before decimal part is characteristic, after decimal part is mentisa. Okay, so अभी हम लोग को क्या करना है कि जो मेंटीसा होता है ना 0.53, इसको लॉग टेबल में देख लो, 0.53 को लॉग टेबल में देखना होगा। सो हियर आई हैव टेकन द लॉग टेबल, ओके, दिस इज द सॉरी एंटी लॉग टेबल। सो 0.53, सो इफ यू सी हियर, so this is the antilog table, right, antilog table. So here no, you have to find out 0.53, अगर सबके पास है तो you can take out, you can see, so you have to find out 0.53 here, 0.53 देखो कहाँ पे, यहाँ पे नहीं होगा, पीछे होगा। So this is, so 0.53 I'll show you here, you see, okay, so this is 0.53, okay, this is 0.53 if you can see. So 0.53 के बाद क्या है, you see here, ओनली 0.53 है ना, ओनली 0.53, इसके आगे कुछ होगा तो देखा जाएगा, लेकिन ये ओनली 0.53 मतलब 0.53 के बाद कुछ नहीं है, जीरो है। सो 0.53, दिस इज 0.53, 0.53 के बाद यहाँ देखो जीरो, ठीक है, जीरो में देखो द वैल्यू इज, क्योंकि 0.53 के बाद कुछ भी नंबर नहीं है हम लोग जीरो लेंगे। अगर 0.531 होगा तो वी विल टेक 0.531, ठीक है, 0.532 होगा तो 0.532 लाइक दैट, ठीक है। सो अभी 0.53 के बाद कुछ नहीं है, दैट मीन्स जीरो, तो 0.53 में जीरो में जाओ, इट इज 3388, तो वैल्यू इज 3388, वैल्यू इज 3388। ओके, नाउ हाउ टू पुट द डेसिमल, सो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक में आओ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक जो है
इसमें क्या करना होता है, digits, the number of digits, okay, yeah, no, not the number of digits, the digit. What is the digit? 35. The digit is 35, you have to add 1. So digit is 35, add 1, so what will be 36. ठीक है, अभी तुमको ये जो मेंटीसा का वैल्यू मिला ना लॉग टेबल से, एंटी लॉग टेबल से, राइट, इसमें तुमको 36 प्लेसेस के बाद में डेसिमल प्लेस करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। आफ्टर 36 प्लेसेस यू हैव टू पुट द डेसिमल। ठीक है, ये ऐसे प्रोसेस है। पहले मेंटीसा निकालो, मेंटीसा मतलब डेसिमल के बाद में जो नंबर है वो एंटीलॉग टेबल से हम लोगों ने ऐसा निकाला। इसके बाद हाउ टू पुट दी डेसिमल, इसके लिए क्या करना है, जो डेसिमल के पहले जो नंबर है कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या करना है, +1 करना है। +1 करने से क्या आया, 36 आया। अभी ये जो हम लोगों ने मेंटीसा निकाला एंटीलॉग टेबल से, यहाँ 36 प्लेसेस के बाद वी हैव टू पुट द डेसिमल। सो हाउ डू वी पुट, वी कैन नॉट पुट, सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट द डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस एंड आई विल राइट 10 टू द पावर 30 व्हाट 35। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू पुट द डेसिमल आफ्टर 36 प्लेसेस। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट द डेसिमल बिफोर 1 number and then I will put 10 to the power 35. This means what, this means the same thing. So this is the value of antilog of 35.53. Okay, so I'll show you another example for doing the antilog so that it will be clear. So now as of now Kc value is coming to be 3.388 into 10 to the power 35. So this is the value of Kc. So you have seen that how we have found out the value of Kc, right? How we have found out the value of Kc and how we have taken out these, for this question how we have done the E cell, we have taken out from the Nernst equation. Using this Nernst equation we have found out the value of E cell, right? The E cell comes out to be this much, right? This one. Okay, how we have found out the delta G naught cell, right? Delta G naught cell by using this expression, right? And how we have found out this Kc. Okay, so antilog, if someone wants one more example, so I'll show you one more example so that it will be clear, more clear. So say you have to find out the antilog, because for finding out Kc antilog चाहिए, ठीक है, antilog का जानना पड़ेगा कैसे निकालना। So say I'm giving 4.5023. So you have to find out the antilog of this number, say. Okay, so how to find out, so this part is the meantissa, so you have to see in the log table. This part is the characteristic, मतलब before decimal. Okay, so meantissa मतलब 0.5023 निकालो, देखो टेबल में, टेबल निकालो, ठीक है। 0.50 इज हियर। ओके, 50 का क्या चाहिए हम लोग को, 50 का 2 का 3, सो 5.50 का 2 यू सी, सो व्हाट इज 2, इट इज 3177. 0.502, 0.502, so it is what, 3177. So write down 3177. Now after 2 what is there, 3 is there, so after 2 you will go and you will go with here, okay, in this table, this difference table. So this is 3, लेकिन 0.50 में ही देखना है। 0.50 का 2 देखा, लिख लिया। अभी 0.50 में ही 3 देखो, ठीक है, लेकिन इस टेबल में देखना, यहाँ पे 3 मत देखना, इस वाले टेबल में देखना। 0.50 का 3 you see it is what, it is coming out to be 2. Okay, 2, so you add here, you have to add here 2. Okay, so the value comes out to be 317.9, right? 3179. Now you have to put the decimal. Decimal कैसे put करना है, तो क्या बोला था, digit. Decimal के पहले digit कितना है, क्या है digit, digit is 4, right? Digit is 4 plus 1 you will do, so it is coming out to be 5, right? 5. So अभी 5 places के बाद decimal put करो, 1 2 3 4 5 like this. Say I'm giving here, say I'm giving here 2, not 4, say I'm giving, because I have taken an example, right? So I'm giving here 2, not 5. Oh. So this will be 2 again, so 2 plus 1 will be 3, so we have to put the decimal after 3 places, right? Because this is 3, so put the decimal after 3 places. So 3179 मिला था, 3 places मतलब 1 2 3, so decimal will come here. This is the value of antilog 2.50
2, 3. So I hope this is clear to you how to find out the antilog. If you want that this is not clear, the antilog, again I can make you another video, okay, but you have to comment for that. And so I'll end here this topic. So if you found any doubt, you please comment and ask, okay. And if you have understood, okay, if कुछ समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जो वीडियो मिले बनाऊँ मैं, राइट, आई मेक अ वीडियो, यू विल गेट द नोटिफिकेशन, राइट. So I'll end here. So thank you so much.